अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू द सेकेंड बुक ऑफ मैथ्स फॉर नर्सरी और हम कर रहे हैं एडिशन। जी, लास्ट पे हमने जो लास्ट लेसन था हमारा वो था ऐड करने का। क्या होती है एडिशन, कैन यू टेल मी। जी, एडिशन मीन्स पुटिंग टुगेदर। और क्या साइन यूज करते हैं हम एडिशन के लिए। जी, we use the plus sign and we use the word all together for that. If we have 2 bananas and 3 bananas, 2 plus 3, how many altogether? Yes, we have 5 bananas. Okay, अब हमने जो आज का कॉन्सेप्ट पढ़ना है my dear kids, वो है opposite of addition. जी, addition का exact opposite जिसको हम कहते हैं subtraction। और subtraction के लिए हम क्या साइन यूज करते हैं, ये साइन यूज करते हैं हम subtraction के लिए। और क्या वर्ड यूज करते हैं, we use some specific vocabulary with these concepts। हम यूज करते हैं वर्ड टेक अवे का या to cut something। अगर मैं कहूँ कि I have 5 apples and I have eaten 2, so we have 5 apples minus 2, तो how many left? कितने रह गए? Yes, we are left with 3 apples. Here we have to take away, we have to cut the numbers. Okay, and if I say I have 7 cupcakes here and I have given 3 cupcakes to my friends, 7 minus 3, how many left? Yes, 4 are left. Let's quickly jump onto our book's page. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारी बुक का पेज which is saying subtraction means taking away. जी, we use minus sign to show subtraction. जैसे कि हमने एडिशन में एक साइन यूज किया था, इसी तरह हम subtraction में भी एक साइन यूज करेंगे, माइनस साइन। ओके, here we have 5 books and we cut down 2 books. So 5 minus 2, how many books are there? Yes, we are left with 3 books. Okay, the next one is a little activity. जो क्या आप करेंगे, हम साथ करेंगे। Count, subtract and write. Oh my God, there are 7 pairs. And we took away 3. So we are going to cut 3 out of the 7. And how many left? Let's count together. 1, 2, 3 and 4. 4 is the answer here. Here in the second box, we have 6 bananas. Wow. And we took 1 out of that. So we are going to cut 1 banana. How many we are left with? 1, 2, 3, 4 and 5. 5 bananas are left. Okay, here we have oranges. How many oranges are there? 4 oranges. And we are going to cut 3 out of 4. So when we cut 3 oranges, 1, 2 and 3. How many we are left with? Only 1 is left. So 1 is the answer. Here is the teacher's point. Help the students to understand the concept of subtraction. Use concrete objects to show subtraction. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने सीखी subtraction. Subtraction means taking away. Don't forget the sign as well. And practice these 2 concepts, addition and subtraction, side by side. तो मेरे प्यारे बच्चों, हम एक नए लेसन के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।